ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના અધ્યક્ષ સમક્ષ પાટીદાર અગ્રણી દિનેશ બાંભણિયા સહિત 5 લોકોએ રજૂઆત કરી। ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ તરફથી જુનિયર અને સિનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાના પરિણામની વિસંગતતા મુદ્દે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના અધ્યક્ષ કમલ દયાનીને રજૂઆત કરી। કમલ દયાનીએ ટેકનિકલ અને કાયદાકીય મુદ્દાઓ અંગે ચકાસણી કરવા 2 દિવસનો સમય માંગ્યો હતો। 2 દિવસમાં નિરાકરણ નહીં આવે તો આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી। जो 2 दिवस में योग्य निराकरण न आवे तो मुख्यमंत्री ने पण रजूआत कराशे। जनरल केटेगरीना विद्यार्थीओने अन्याय थयो होवाथी विविध समाजोने साथे राखीने लड़त आपवानी तैयारी करवामां आवी छे। सीसीईनी एक्जाम में ओपन केटेगरीना उम्मीदवारोने बहु मोटो अन्याय थयो छे त्यारे समग्र समाज वती अने लोको वती अने विद्यार्थीओ वती अमे आज कमल दयाणी साहेबने मळवा गया हता। कमल दयाणी साहेबने नोटिफिकेशन और जीपीएससी एक्जाम पेटर्न विषे माहितगार कर्या अने खास विनंती करी है कि भाई जीपीएससी जे एक्जाम पेटर्न है ये प्रमाणे अने गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडळे जे जाहेरात आपी थी एना जाहेरातना नियम मुजब केटेगरी वाइज उम्मीदवारों लिस्ट प्रिलिम परीक्षा होवाथी बहार पाडवामां आवे एटले एमणे अमने 2 दिवसनो समय माग्यो छे कि 2 दिवसमां अमे टेक्निकल अने कायदाकीय आनी सलाह लई अने आ बाबते विचारीशुं। संपूर्णपणे एमने माहितगार कर्या छे अने बाकीनी जेटली पण एक्जामो गुजरातमां लेवाय छे ए बाबते पण अमे एनुं ध्यान